Okay, is this visible? I have shared one OneNote document, new section 10. Is this visible? Yes, sir. Okay. So Sir, visual. visible, na? So this will be the one of the examples, one example from RPVAS we are taking here today. See here, what is the question? Question is a manometer is of 60 centimeter long. Okay. The total length, this one is 60 centimeter. Okay. 60 centimeter and 6.3 mm inside diameter. So inside diameter is 6.3 mm. Okay. Tube is half filled. Half filled means it is total divided by 2. 30 centimeter is half filled. So the tube is like this. Okay. So yeah, liquid to liquid is height is 30 centimeter. ठीक है? Is this okay? And this height is 60 centimeter. This length is 60 centimeter. This point to this point. Agree? The manometer is subjected to a pressure differential of 3500 Newton per meter square. Determine the following: time constant and damping coefficients है. हमें identify करना है. Indicate if the manometer is suitable. Suggest design of the manometer considering the initial transient state. Initial transient state. Remember, initial transient state means whenever it subjected to a step change of 3500. Suddenly one level in the this say pressure difference यहाँ आ गया है 3500 डेल्टा पी मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसको डेल्टा पी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लग रहा है. Because of that, what will happen? It will push this particular liquid over here, and before to come to the rest, it will fluctuate about this value, and then will come to the rest. है ना? ये ऊपर जाएगा फिर नीचे नीचे आएगा and then it will come to the rest likewise. है ना? Okay, this is a very general observation. So very first thing is that कि भाई let's balance the forces and identify कि whether that liquid is what is the geometry of that particular U-tube and U-tube manometer and the liquid associated with this, whether that particular design, that means the length is suitable for the initial transient state, so that can it be that particular peak it can sustain. Okay, so it represents that कि let's start with how to solve it. हमें टाउ आइडेंटिफाई करना है, झाई आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, टाउ और झाई आइडेंटिफाई करना है. इसका मतलब वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कम्स इनटू द माइंड इज दैट दिस इज द फर्स्ट सेकंड ऑर्डर सिस्टम, है ना, बिकॉज झाई इज एसोसिएटेड विद सेकंड ऑर्डर सिस्टम ऑलवेज, है ना. सो तो पहली केस में तो हमें पता है कि दिस इज अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम. सो सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमें पता है कि वी कैन कोरिलेट इट विद द ys by xs is equal to 1 upon tau square s square plus 2 tau plus 1, है ना. ये फॉर्मेट में है, हमें पता है. फिर यहाँ से टाउ निकल सकता है, ये यहाँ एस चाहिए, और यहाँ से झाई निकल सकता है. जब हम टाउ स्क्वायर को इक्वेट करेंगे 2 टाउ को इक्वेट करेंगे, देन यू विल कैलकुलेट दिस टू. ओके, यहाँ से टाउ निकलेगा, टाउ को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से हमें डैम्पिंग कोएफिशिएंट मिलेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट एक्चुअली द कांसेप्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू सॉल्व इट. Okay, now
Uh, oh, okay. Again, they're writing it. So let's start. Now, the pressure differential, if we consider how much pressure differential, it is 3500. Okay, delta P is equal to 3500 is given. Okay, and similarly, delta P can be equate is equal to delta H rho G. This is the simple balance. Okay, delta P is equal to H rho G, delta H rho G. फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी किया नहीं है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. So what will happen? I have delta P. I know the density. I know the G value. So I can calculate delta H. Let me know what is the value of delta H. Calculate. Anybody please tell me what is delta H? Calculate delta H. Density is given. Density of water is given. 9.8. Acceleration due to gravity is given. What will be the delta H? चलो बोलो. What will be the delta H? It will be, yes, it will be delta H. Okay, so delta H is 0.356. 0.356. Round off कर लेते हैं 0.357. But what is delta H? Delta H is nothing but it is going down by this height and it is rising by this height. So it is actually twice H. See the geometry. ठीक है. So the actually delta H is nothing but twice H. So what will be the H? Tell me. What will be the H? 0.178. 0.178 meter. Okay, or we can say that it is 0.18 meter of water. देखिए, because of the 3500 Newton per meter square which was exerted on the one limb, okay, because of that it is observed that this delta P it can sustain only, or it will balance by displacing the liquid by in the one limb by a height of 0.18, because of it will may displace the liquid 0.18 meter. But if you see the geometry, how much empty space above the liquid is available? The tube is of 60 centimeter long. Half filled is liquid, that is 30 centimeter. At time t is equal to 0, when it was at a rest, how much empty space was available above the liquid head, above the liquid level? How much it was? It was 15 meter. Okay, but how much H it supposed to be achieved? Height it will achieve. It will achieve 0.18.
0.18. Okay, so the H, which is 0.18, and available is 0.15, which is not suitable, and this cause it will come out of the tube. The working fluid will overflow. The overflow will take place. It will spill out of the tube. है ना? Are you getting my point? जब ये this is nothing but the force balance, whatever the balance, mechanical balance we are considering delta P is equal to delta H rho G. जब डेल्टा P अगर प्रेशर इतना रहेगा तो डेल्टा H कितना रहेगा? It will be a 0.357 मीटर. इसका मतलब एक लीम में वो H कितना अचीव करेगा? 0.18 नियर अबाउट. एंड अवेलेबल स्पेस कितने है उसके पास? अवेलेबल इज 0.15. Okay, so it is observed that if such type of situation will arise, that time the liquid will spill out of the tube and this will be the loss. So this particular YouTube manometer is not suitable for the design, or it is not suitable for sustaining that much amount of delta P, 3500 Newton per meter square. Are you getting my point? Is this okay? ठीक है. So this is what the explanation is needed. So what will happen? Suggest design of the manometer. देखिए ये this is not the transient initial transient state नहीं है. This is the final ultimate change है ये. Whatever we are calculated H is equal to 0.18, ये ultimate change है. अगर ये सेकंड ऑर्डर निकला और ये अंडर डैम्प निकला तो ये अल्टीमेट वैल्यू के ऊपर जाएगा. इट विल रीच द पीक, है ना? हमने देखा है इट विल रीच द पीक. ये देखिए, इज दिस विजिबल? अगर ये अंडर डैम, देखो एट प्रेजेंट आई डोंट नो वेदर इट इज अ अंडर डैम सिस्टम और नॉट, और वेदर इट इज अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, है ना? बट एक आइडिया है हमारे पास कि हाँ वो सेकंड ऑर्डर है, वी नो दैट. ठीक है, हमने डिराइव कर चुके हैं. बट वेदर इज ओवर डैम और क्रिटिकली डैम और अंडर डैम, आई डोंट नो राइट. बट अगर अंडर डैम रहता है तो जो हमने अब 0.18 निकाला है मीटर, दिस इज नथिंग बट वाई अल्टीमेट. दिस इज नथिंग बट वाई अल्टीमेट. So y peak, that is the y max, will be more than that of 0.18. हमारे पास available तो 0.15 ही है above the empty space, above the liquid head. Empty space available is 0.15 meter, but its ultimate value itself greater than that of the available space of it, है ना? Empty space available. And again, addition to that, that it may reach the other different peak in a transient state. That means the more length of the tube is required. Are you getting my point? If it will be a under dam system, अगर under dam रहता है तो. So what we will do? I will identify whether it is over dam or under dam or critically dam. For that purpose, okay. Before to move on that, to identify the under dam, over dam, and that situation, अगर what particular action we can
take to avoid such type of spilling out? Either you increase the length of the tube, first option will be there. Second will be either you can or you can change the liquid working fluid. उससे क्या होगा, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो डेल्टा एच चेंज हो जाएगा और सो द एच विल चेंज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? To avoid this such type of situation of overflow, if it is spilling out, either you increase the length or change the liquid. Change the liquid. ठीक है? Are you getting my point? Is this okay? Please respond. Yes, sir. ठीक है. अब नाउ व्हाट वी आर कंसिडरिंग दैट कि हम मान लेते हैं कि हम लिक्विड चेंज नहीं करेंगे एंड वी विल गो फॉर टू चेंज द लेंथ ऑफ द ट्यूब. बट हाउ मच लेंथ इज नीडेड? देन फॉर दैट पर्पस आई हैव टू आइडेंटिफाई कि what will be the psi value. Okay, so as far as the YouTube manometer, we have already derived that tau is defined as L by twice G, while psi is defined as 8 mu L by D square rho G tau. So I'm expected that could you please solve it for me? Can you please? What will be the tau? Length is known. Okay, this L is liquid, not the YouTube. बताइए tau क्या आ रहा है और psi क्या आ रहा है? Just tell me. What is tau and what is psi? Just do it fast. Anybody? बोलिए. Prabhuda Gope, correct. Tau is 0.124 second. Prabhuda answered this question is and he is correct. Is 0.124 second. Correct. What will this I? Hmm? बोलो. 8 into 10 to the power minus 3 into 0.30 divided by diameter is given 6.3 into 10 to the power minus 3
कैलकुलेट, ओके। इंटरनल डायमीटर दिया है into 1000 is the density, 8 into 0.1, कितना आ रहा है? It is correct. Hansraj and Ali Sheikh is giving correct answer. It is 0.05. 0.05. Correct, 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 correct. Pranit is giving correct answer. Everyone. तो क्या है? अब now high is coming out 0.05. So let me know whether it is overdamp, critically damp, or underdamp. With whom you will compare this value of psi. चलो बोलो. Psi will be, it is underdamp. Psi is less than 1, so underdamp, correct? So the system is underdamp. Why? Because it is less than 1. Okay, so it is less than 1. Okay. अब आपको पता है कि अरे हाँ, तो फिर ये आपको ये पिक्चर याद आना चाहिए. दिस इज अंडरडैम्प सिस्टम. If it is underdamp system and 3500 is a step change, then it will behave like this one. So you just remember this diagram, and this diagram gives us the information about the nature of the output. So this is the transient state where it will cross the ultimate value. The ultimate value is 0.18. It will reach to the peak, and again it will return back, and it will fluctuate with reducing amplitude about its ultimate value. So that time, this is my 0.18 will be my ultimate value, and the peak I have to calculate. So that this calculation will help us to identify how much available empty space is needed, and so that the length of the tube we can calculate. Are you getting my point? समझ में आ रहा है क्या? है ना? जब हम y max निकालेंगे उसके बाद ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें एम्प्टी स्पेस कितनी चाहिए अबव द लिक्विड लेवल. ओके, लिक्विड लेवल मींस द रेस्ट लिक्विड लेवल जब आप t is equal to 0 है उसके अबव. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. ये अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं. हाउ टू कैलकुलेट. देखिए, आई हैव दैट डायग्राम. ओके, आई एम जस्ट, अब उसको मैं यहाँ ले लेता हूँ. ठीक है, अब मैंने ये ले लिया है यहाँ. देखिए, नाउ इट विल बी मोर इंटरैक्टिव. सो अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम इज अंडर डैम्प है. अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये ए जो है और ए प्लस बी कितना है. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द जियोमेट्री. व्हाट इज जियोमेट्री रिप्रेजेंट दैट दिस वाई मैक्स इज नथिंग बट ए प्लस बी. अगर सिंपल ज्योमेट्री में यूज कर रहा हूं, ए प्लस बी है. ठीक है, अब मैं यहां से b को कॉमन निकालता हूं. व्हाट विल रिमेनिंग, इट विल बी a बाय b प्लस 1 विल बी देयर. ठीक है, अब a बाय b क्या है? देखिए, व्हाट इज a बाय b, व्हाट इज a बाय b? इट इज, बताइए, दिस इज ओवरशूट. दिस इज ओवरशूट. सी हियर,
The very first property is overshoot of the underdamped system. It is overshoot, and its formula is e raised to the power minus pi xi by under root 1 minus xi square. So this terminology is overshoot. This terminology is overshoot. Okay. So let's calculate overshoot. E raised to the power minus pi xi by under root 1 minus xi square. You have value of xi and calculate. Tell me. बताइए. What will be the a by b? Yes, Prabhuda is correct. 0.85. 0.85. And what is the value of b? What is b? It is 0.8. It is 0.8. Sorry, 81 लिखा है मैंने. It should be 0.8. It should be. This is a 0.8. 1. Substitute these values over here. And what will be the y max you will get? Tell me. Because it is 0.333 मीटर से. यस. अब बताइए, देखिए हमारे पास जो ये था, इसके ऊपर सिर्फ हाइट कितनी अवेलेबल है? 15 है. ठीक है. अल्टीमेट चेंज 0.18 आ रहा है. बट जब इनिशियल ट्रांजिशन स्टेट हम देखते हैं तो वाई मैक्स कितना आ रहा है? 0.33 आ रहा है. ठीक है ना. तो इसका मतलब इसमें हमें काफी काफी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी. सो हाउ मच लेंथ वी हैव टू increase? The total theoretical length. Length of the manometer for both limb will be 0.30 तो है ही, plus above this is this is 2 into 0.333. The length will be needed. ठीक है. देखिए 0.30 is the liquid when it was at rest. Above that it will reach 0.33. है ना. ये लिक्विड रेस्ट के अबव, जब लिक्विड वाज एट रेस्ट तो ये इटसेल्फ इट्स अ 30 सेंटीमीटर. यहां से यहां, हाँ यहां से यहां. ठीक है. उसके अबव 0.33 चाहिए हमें, बट इट शुड बी ऑन दी बोथ लिम्ब. है ना. यूनिफॉर्म लेंथ हमें बढ़ानी पड़ेगी. सो इट विल बी अ 0.966 मीटर. Are you getting my point? Why these two factor is there? ठीक है. This is the liquid, and above that it will raise, that the height will raise up to, it will 2 into 0.333. Two factor represent that uh, we keep the length of the two limbs same in general. Okay. So ये क्या हो गया कि 0.33 इट्स वेरी 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 स्पेसिफिक हो गया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि ओनली वहां तक पहुंचेगा. बट हो सकता है. वी ऑलवेज कंसिडर द सेफ्टी फैक्टर हमें लगाना पड़ता है ना. एक सेफ्टी फैक्टर लगाना पड़ता है. सो एक्चुअल लेंथ क्या है? एक्चुअल लेंथ विल बी अ 0.15 फैक्टर.
परसेंट हम वी नीड टू कंसिडर। तो मेरे पास है, मैं सेफ्टी फैक्टर इसमें ऐड करूंगा एंड दिस विल बी माय 1.15. So ultimately it will be 1.11 meter. Okay, I am not. Is this okay? So this much actual length is needed by adding a safety factor and all. ठीक है, हमारे पास अवेलेबल क्या थी, फिर अल्टीमेट कितना निकला, फिर अंडर डैम्प निकला सिस्टम, उसके लिए पिक के लिए वो सस्टेन करने के लिए हाउ मच लेंथ इज नीडेड, एंड इट इज द टोटल लेंथ इज 1.111 मीटर और 111 सेंटीमीटर, यू कैन से 111 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं हमारे पास क्या अवेलेबल था, सिर्फ 60 मीटर था, सिर्फ 60 मीटर था। बट अगर 3500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर वहां डालते हैं, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ लेंथ इज नीडेड, दैट मैनोमीटर नीडेड इज टोटल लेंथ इज 111 सेंटीमीटर कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ बोथ लिंक। न्यूमेरिकल समझ में आया? ठीक है, काफी सिंपल है, इट इज नॉट दैट मच बिग, इट इज जस्ट अ बैलेंस। ओके, सो लिटिल हमें याद क्या रखना है कि ये फार्मूला याद रखना है, एक दो, ये तो ज्योमेट्री है ए बाय बी वाली, और फार्मूला आपको रखना है, ये याद रखना है कि ओवरशूट का फार्मूला क्या है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग, ये फार्मूला हम किस लिए यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस वैल्यूज को कि टाउ कैसा है, जाय कैसा है। सिमिलरली ओवरशूट भी हमें ए बाय बी आइडेंटिफाई करना है, इसलिए वो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं उसका। ठीक है, ये सही है, समझ में आ गया? एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस? हम्म, नहीं? ओके, oh, now I would like to again take one numerical। ये देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन है, a step change of magnitude 10 is introduced into a system having the transfer function ys by xs is equal to 6 by 0.9 s square plus 0.3 s plus 10. Determine percentage overshoot, rise time, maximum value of yt, ultimate value of yt, cyclic frequency, radian frequency, period of oscillation. So let's start. चलो स्टार्ट करो। चलो, आई विल आस्क टू एनीवन। Tell me the value of, first of all, identify hmm, hmm, बोलो कैसे करोगे आप? Let me tell you, ys by xs is given, bring it into a standard format,
ठीक है, एंड कैलकुलेट। चलो बताइए टाउ कितना आ रहा है। दिस इज टाउ, दिस विल बी 2 साइड टाउ, तो टाउ एंड साइड। हम्म टाउ इज 0.3। यस यस, शुभम, विघ्नेश, प्रणीत, ठीक है, एंड साई इज 0 पॉइंट, लेट मी नो द 0 पॉइंट, साई 0.05, 0.05 करेक्ट। प्रबुद्धा, यस यस यस, करेक्ट। सो टाउ इज 0.3 and psi is 0.005. Again, it is under dam system, okay? Under dam system. So overshoot is, overshoot e to the power minus pi psi by under root 1 minus I square. Overshoot is 0.8545. ठीक है, decay ratio is overshoot square. Decay ratio is overshoot square. बताइए। करेक्ट करेक्ट, बढ़िया। Decay ratio is 0.7301, correct. 0.73. I got 0.730. Correct. Nikita, Pratish, correct. Pranit, correct. Shubham, correct. Hansraj, correct. Correct. Okay. Decay ratio. What will be the YT max? Maximum value of YT. ठीक है, आपको वो करना है 10.6 मल्टीप्लाई, करेक्ट, 11.6 रहेगा। अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट वैल्यू ऑफ YT क्या रहेगा? हम्म ठीक है,
You can calculate cyclic frequency, radiant frequency, period of oscillation. ठीक है, T is 2 pi tau by under root 1 minus psi square period. Okay, omega, calculate 2 pi f. Okay, what is T and f? 1 upon f, है ना? Likewise, calculate. And y max we can calculate by ultimate value a by b plus 1. Again, tell me tomorrow. ठीक है, ये कैलकुलेट